Good morning students. Students, in today's video I will discuss about the mechanism of enzyme action, and I will tell you that how one enzyme acts on substrate and turns it into the products. And the mechanism of enzyme action is also referred as lock and key hypothesis. Actually student, why it is referred as lock and key hypothesis? I am going to tell you that because as the key fits on the lock and opens the lock in the similar pattern, the fixed shape of the pattern and the fixed shape of the active site of the enzyme fix with each other and form a complex which is called as enzyme substrate complex, and finally turns into a new complex which is called as product enzyme complex, and releases products. So here in this picture you can see that the bluish picture is of a substrate and the yellowish picture is of one enzyme, and you are observing the active site of the enzyme, and the active site of the enzyme gets fit with the substrate and forms a complex, and this complex is called as enzyme substrate complex. Here I am showing you what are the various steps of mechanism of enzymatic action. Now initially the substrate binds to active site of the enzyme. Now binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape and fits more tightly around the substrate. Here in the picture you are observing, initially the enzyme is going to bind with the substrate, and while it is binding with the substrate you are observing this enzyme is changing little bit its shape. That's why it gets more attached or more binded with the substrate or more tightly binded with the substrate. Now the active site of the enzyme now is close proximity of the substrate breaks the chemical bond of the substrate and forms a new complex which is called as enzyme product complex. Here in the picture you are observing enzyme substrate complex is there. Now due to the active site of the enzyme, now what happens, the chemical bonds of the substrates are going to break down, यानी कि जो substrate के chemical bond हैं वो break हो रहे हैं, and it will form a new complex, and this complex will called as instead of substrate enzyme complex it will be called as enzyme product complex. मीन्स पहले बना था आपका substrate enzyme complex. नाउ अब एंजाइम की एक्टिव साइड इसे क्या केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करेगी और इसे कन्वर्ट करेगी किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में. नाउ एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू टेक अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट. नाउ अब क्या होता है, जैसे ही आपका एंजाइम प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बनता है तो एंजाइम उसे रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है और खुद एक दूसरी रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है. ठीक है. Here in this picture you can say observe that maltose is the substrate and there is one enzyme. ठीक है, and maltase is the enzyme, and the active site of this enzyme is going to fix with the maltose or substrate, and finally you are observing that due to the active site of enzyme, two molecules of maltose which are glucose molecules are going to break or going to separate from each other because the bonding is going to break, and product two molecules of glucose are formed, and the enzyme is once again free to catalyze the one another chemical reaction. So in this way, so you observe that how the enzyme substrate complex forms initially, and then how it converts into uh, enzyme product complex, and finally how the products are released and enzyme once again get ready for the next reaction. Now after it I want to discuss some factors which are affecting the chemical, which are affecting the rate of enzymatic action. Now initially I am talking about temperature. Now there is a great role of temperature while we are observing the enzymatic action. Now if you will observe this graph, I am not going in detail, I will discuss only with this graph. So if you will observe the x scale is x-axis of the graph is showing temperature in degree Celsius, while the y-axis is representing the rate of enzymatic activity. Now if we will observe that if the temperature is ranging from 0 to 40, then the enzymatic activity is going to increase. Now at 40 degrees Celsius, what happens, this is the optimum temperature. After that this temperature 40 degrees Celsius is the optimum temperature when the enzyme will act efficiently, means सबसे अच्छा perform करेगा. आप
एंड व्हेन द टेम्परेचर विल बी एक्सीडेड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि जो एंजाइम्स को बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स जो बॉन्ड हैं वो टूटना शुरू कर जाएंगे, और आपका जो जो एंजाइम है वो आपका फंक्शनल नहीं रहेगा। यानी कि वी कैन से दैट विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द एंजाइमेटिक एक्शन कैन इंक्रीज, बट देर इज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। आफ्टर दैट द एंजाइम स्टार्ट्स टू डिग्रेड और degraded, I have to say that, or we can say that in another words, this is the optimum temperature, is a kind of temperature in which the enzyme works efficiently. After that you are observing the graph is once again going down, it means the activity, enzymatic activity is going down. Now the next factor which influences the enzymatic action is called pH, ठीक है। Now you are once again observing one graph, ठीक है। pH scale is here in the x-axis and y-axis is representing the enzymatic activity. Now you are observing while the pH is going to increase, means it is representing, this graph is representing between 4.8 to approximately 10.8. If you are observing while the pH is going to increase, ठीक है, then the effectiveness or the we have to say that the rate of reaction is increasing till pH 8, and at pH 8 there is a peak, and after that you are observing the efficiency of rate of reaction is going down. So it means there is an optimum pH, ठीक है, which is around 8, in which the enzyme act best. Now effect of the substrate concentration. Now substrate concentration means I have to say that कि कितना substrate available है, ठीक है, it depends on it. Substrate concentration is represented in x axis and y axis is representing the rate of the reaction. Now अब जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा एंजाइम उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे। फॉर एग्जांपल 100 एंजाइम्स हैं तो उनके लिए 100 सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 2 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जाहिर सी बात है कम है। अगर 50 है थोड़ा बढ़ जाएगा, 70 है और बढ़ जाएगा। अगर 100 एंजाइम है और 100 तक सबस्ट्रेट है तो उस टाइम पे आप देखोगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब 110 अगर सबस्ट्रेट होंगे बट एंजाइम तो 100 ही है ना, उसके बाद क्या होगा, आपका रिएक्शन का जो रेट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। यू आर ऑब्जर्विंग ए कॉन्स्ट इनिशियली यू आर ऑब्जर्विंग द लाइन इज द ग्राफ इज रेजिंग वेरी क्विकली, देन इट इज़ बिकमिंग अ फ्लैट लाइन। तो फ्लैट लाइन बनने का मतलब ये है कि वाइल द नंबर ऑफ द एंजाइम्स एज वेल एज द सबस्ट्रेट इज बिकम इक्वल, देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, ठीक है, बिकम कांस्टेंट। इज इट क्लियर? नाउ there are certain chemicals which also impact on the rate of reaction or which also show their impact on the enzymatic activity, ठीक है। there are certain chemicals and these chemicals are called as inhibitors, क्योंकि ये inhibitors वो chemicals हैं जो enzymatic activity को influence करते हैं, rate of reaction को decrease कर देते हैं, ठीक है। now these inhibitors may be of two types, these may be competitive inhibitor or non competitive inhibitor. now here in the picture you can see that succinate is is one substrate and the malonate is the another substrate. if the you will observe both of the substrates यानी सक्सीनेट और मेलोनेट अगर दोनों को देखेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर तकरीबन तकरीबन सेम है। when inhibitor closely resembles substrate in molecular structure to binds to active site of enzyme, तो यानी कि जब क्या होता है कि नहीं दो मतलब कोई सबस्ट्रेट है और उसी सबस्ट्रेट का बिल्कुल एक रिजेंबलिंग दूसरा सबस्ट्रेट आ जाता है, तो एंजाइम जो है पहले के साथ ऐड न के साथ कॉम्प्लेक्स न बना करके दूसरे वाले सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो पहले वाले का आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, दूसरा वाला जो आपका सबस्ट्रेट है वो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करने लगेगा, तो एंजाइम खाली आपके क्या हो जाएंगे, वर्थलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। नाउ वेल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज काइंड ऑफ इनहिबिटर विच डू नॉट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट तो नहीं करते हैं बट एंजाइम्स के साथ ऐड होकर के उनका स्ट्रक्चर, उनकी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं जिससे एंजाइम ऐड ही नहीं हो पाते उनके साथ, ठीक है। now here you can see that the first one picture is showing competitive inhibitor and the second one picture is showing non competitive inhibitor. now competitive inhibitor interferes with the active site of the enzymes, देखिए आप देखिए तो आपका सबस्ट्रेट की जगह कोई दूसरा सबस्ट्रेट आकर के ऐड हो जा रहा है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आपका ऐड ही नहीं हो पा रहा, तो आपका कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पा रहा है। नाउ इन द सेकंड केस आप देख रहे हैं कि एक येलो कलर का आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड हो जा रहा है जो सबस्ट्रेट के जो आपके एंजाइम की एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर दे रहा है और जिसकी वजह से उसमें आपका सबस्ट्रेट फिट ही नहीं हो पाएगा। तो सबस्ट्रेट फिट ही नहीं होगा तो अब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, तो आपका रिएक्शन का रेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इज इट क्लियर? So these are some factors which are influencing the rate of reaction of enzymes. Now at last I want to discuss some cofactors. Now
There are some enzymes. Now initially I want to tell you that what are cofactors. So initially I want to tell you that the enzymes may be of two different types: simple enzymes and conjugate enzymes. Now what are simple enzymes? Those enzymes which are generally proteins, मतलब कई सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहे हैं और प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो यानी एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ एंजाइम हो सकते हैं जिन्हें हम सिंपल एंजाइम बोलते हैं. वाइल कॉन्जुगेट एंजाइम्स मींस, कॉन्जुगेट एंजाइम्स मतलब यहाँ पे आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन हो, वो एक चेन हो या दो चेन आपस में ऐड हो और इनके साथ नॉन प्रोटीनियस कोई मोइटी, मोइटी का मतलब है ग्रुप कोई ऐड हो. ठीक है. इफ प्रोटीन चेन ऑफ एंजाइम is added with some another non-proteinous substances or moiety, then it is called as conjugate enzymes. Now conjugate enzyme में आप देखेंगे दो चीज़ें प्रेजेंट हैं. फिर एक तो प्रोटीन चेन प्रेजेंट है और दूसरा आपका नॉन प्रोटीनियस कोई मोइटी आपकी प्रेजेंट है. तो जो प्रोटीन चेन प्रेजेंट है उसको तो एपो एंजाइम बोल देते हैं, और जो अदर चीज़ जो आपकी प्रेजेंट है, अदर आपकी नॉन प्रोटीनियस जो आपकी ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स. ठीक है. हेयर यू आर ऑब्जर्विंग एपो एंजाइम. एपो एंजाइम मीन्स, तो जो आपके कॉन्जुगेट एंजाइम्स हैं इनके पास दो चीज़ें हैं. एक तो आप इनके पास क्या है, प्रोटीनियस चेन है और इसके साथ दूसरा कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीनियस पोर्शन है. तो ये दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं, आपके हेलो एंजाइम या इनको कॉन्जुगेट एंजाइम इनको बोल देते हैं. तो हेयर यू आर ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ हेलो एंजाइम और conjugate enzyme. And the conjugate enzymes are made up of two things: apoenzyme means the proteinous part of the enzyme, while the cofactors are called as non-proteinous portion. Now there are three different types of cofactors. The first one is prosthetic group. ठीक है. Prosthetic groups are tightly packed with the apoenzyme. These are some organic compounds which are very tightly attached with the apoenzyme, like हीम ग्रुप आपने सुना पड़ा होगा, हीमोग्लोबिन. ठीक है. नाउ को एंजाइम्स में भी ऑर्गेनिक ग्रुप आपके एंजाइम्स के एपो एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं, बट ये बाइंडिंग जो होती है केवल रिएक्शन के टाइम पे होती है. नाउ दीज बाउंड एपो एंजाइम ड्यूरिंग ओनली कोर्स ऑफ कैटालिसिस लाइक NAD और NADPH. ठीक है. नाउ देयर आर सम मेटल आयंस, दीज ऑल्सो एक्ट लाइक अ कोफैक्टर. ठीक है. मेटल आयंस फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द साइड चेन्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. तो यानी कहने का मतलब है कि जो आयंस होते हैं, जनरली आयंस क्या करते हैं, जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट की जो साइड चेन्स होती हैं उन साइड चेन्स पे कोवलेंट बॉन्ड बना करके ऐड हो जाएंगे, या सबस्ट्रेट की जो साइड चेन होंगी उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना करके ऐड हो जाएंगे. लाइक जिंक है आपका. ठीक है. ये आपका किसकी तरह काम करता है, कोफैक्टर्स की तरह. सो इन दिस वे आई एम कंक्लूडिंग टुडेज टॉपिक. आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स विच आई डिस्कस्ड. स्टिल इफ यू हैव एनी query, please concern with me. Thank you. Bye bye and have a nice day.